ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂದರೆ 1950ನೇ ಇಸ್ವಿ ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಅದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿತು. ಅದನ್ನು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಗ್ರಂಥ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಅದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ್ದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅಚ್ಚು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರದ ಒಂದು ವಿವಾದ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। हम बांध के निकले आजादी की राहों में। कफन हम बांध के निकले आजादी की राहों में। निशाने पे जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे जिंदगी अपनी मिटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते। वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। ಸುಂದರ ತಾಯ್ನೆಲವು ನಮ್ಮಿ ತಾಯ್ನೆಲವು ನಮ್ಮಿ ತಾಯ್ನೆಲವು ನಮ್ಮಿ ತಾಯ್ನೆಲವು
ये वक्त की आवाज है मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है मिलके चलो, मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो। आज दिल की रंजिशें मिटा के आ, आज भेदभाव सब भुला के आ, आजादी से है प्यार जिन्हें देश से है प्रेम, कदम कदम से और दिल से दिल मिला के आ, आज दिल की रंजिशें मिटा के आ, आज भेदभाव सब भुला के आ, आजादी से है प्यार जिन्हें देश से है प्रेम, कदम कदम से और दिल से दिल मिला के आ, मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है मिलके चलो, ये वक्त की आवाज है मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है मिलके चलो, मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो। जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिले बड़े आग के, जिस तरह चिराग से चले चिराग, वैसे चले बेग तेरा मेरा त्याग के। जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिले बड़े आग के, जिस तरह चिराग से चले चिराग, वैसे चले बेग तेरा मेरा त्याग के। मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है मिलके चलो, ये वक्त की आवाज है मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है मिलके चलो, मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो मिलके चलो मिलके चलो। As the sun has gotten warmer, and in surroundings like this, I cannot bring this function to a conclusion without saying a few words. I believe looking around the gathering here, there's almost nobody here who is a child of independent India. And there are very, very few people here who can really claim that they were born before India became a republic. But there's almost no one here who really has any memories of the First Republic Day. Therefore, when we gather here on days of national celebration, we are really celebrating days whose significance is fast receding into history. When we gather here then, so many years after the First Republic Day, what we really attempt to do is to turn a day of celebration into a day of introspection. And when we introspect on the country and the progress which it has made and the difficulties in which it finds itself so many years after it declared itself a republic, we might in fact reflect on all the events that have happened over the last several years. And we might also come back to more familiar surroundings, our own institution, and ask these questions. In this institution, every member of this institution must remember that this institution holds a unique place in India's history. It's one of the very, very few institutions in India which were created long before independence, and as a consequence have in fact survived, grown,
and flourished through a century which has been an extraordinarily turbulent century. When you stand in surroundings like this, remember that it is a privilege to stand in surroundings like this, and therefore each and every one of you has then an obligation to ensure that the Institute becomes better and better with time. And the only way that this can be achieved is if every member of the Institute really works extremely hard to do what they are supposed to be doing here. Look around the surroundings, especially those of you who are students. Behind me is the statue of the founder of the Institute, Jamshed Tata. He died in 1904, long before independence, long before the Republic was declared. He nevertheless had a vision of an India of the future. Till a few years ago, this was the only statue that you could see. Now if you look straight down in a straight line into the main building, you will now see the bust of the Maharaja of Mysore. He gave the land for this institution more than 100 years ago. He was another true visionary looking at India of the future. We are indeed in these surroundings blessed that men like this existed in India a long time before we even began to think of an independent India. Therefore, I would like to emphasize that when you are here in these surroundings, you belong to a truly privileged group of people. And therefore, it is incumbent upon you to ask what it is that you can do to ensure that the reputation, the standing of the Institute in the world keep on growing. And as the institution becomes more and more important worldwide, India will also become more and more important worldwide. My colleagues, Dr. Verma, Dr. Guttal have referred to many things, some of which are current. The children, for example, when they sang their song, asked us all to move together. Sometimes it is moving together which has proved extraordinarily difficult in many situations in this country. On a day like this, we can do no better than to reaffirm our commitment to working both for the cause of the country and also for the cause of the institutions in which we work. In bringing this function to a conclusion, I would like all of you to join me in saluting our country by repeating after me, Jai Hind 3 times. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Thank you.